other host, my partner and my friend Aditya. Welcome all to this second episode of Market Masti Weekly, and I would also like to, thank everyone for watching our previous and first episode last week and providing us invaluable feedback. So, Aditya, how was your week on the personal front as well as from the market's perspective? Yeah, week was good. I mean, the stock market wasn't so good because all markets fell a bit here and there. So uh, I think it's probably a good buy on the dip opportunity. Um, so hopefully it will improve. So before we move any further, I would like to quickly get through the our customary disclaimer that both of us are not SEBI registered invest advisors, and content shared in this video as well as this channel is purely for educational and informational purposes. It should not be considered in any way as an investment advice, and you must consult a qualified financial advisor before making any investment decisions. Yeah, so last week, as the first bullet point suggests that we had a strong GDP growth numbers. So this came out to be 7.8 percentage, which was much higher than our anticipation. So on the surface, the number looks excellent, and that's very good, commendable job for the whole economy. But the thing is that if we look at these numbers, they might not tell the true state of the economy. The reason why this is happening is because there was a lot of front loading that has happened. As you know that the tariff and everything has been applied in August. So we can see what happened was that a lot of clients of Indian exporters from US, Europe, and all that they probably placed orders in advance of the tariffs and all that. So as per because of that effect, what happened that the GDP numbers for the first quarter have come out exceedingly well, and probably the next quarter also the numbers might be slightly okay, but in the later half, because of the tariff impact, these numbers might go down because a lot of US importers may have already placed orders in advance. So that effect will be seen. So we should not be fooled by this number that 7.8%. We should not have higher expectation that these numbers should be retained. I believe these numbers would go down significantly in the quarters to come. Yeah, sure. So with regard to the first point, right? So मुझे लगा कि कुछ वर्ल्ड लीडर्स का कहना था कि इंडिया का इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, बट इट इज़ प्रूविंग other way around, right? So, and also in terms of comparative analysis, right? अभी वर्ल्ड का जो नंबर 3 इकोनॉमी विच इज़ जर्मनी. So if you have seen the news that German economy has gone down by 0.3%, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया बहुत ही जल्दी, आई मीन सुनर देन एक्सपेक्टेड, नंबर 3 इकोनॉमी, वर्ल्ड की नंबर 3 इकोनॉमी बन जाएगा. क्योंकि जर्मनी एक तरह से, जर्मनी का इकोनॉमी घट रहा है और इंडिया का इकोनॉमी जिस तरह से बढ़ रहा है, लगता है कि आई मीन सून इट विल बी नंबर 3 इकोनॉमी देन एक्सपेक्टेड. Yeah, definitely. Yeah, it can happen anytime between next 1 to 2 years. Yeah, so yeah, let's hope, keeping our fingers crossed. That's a good news for India. Yep. और वो होने वाला है, इसलिए हमें नेक्स्ट 10, 15, 20 ईयर्स अपनी इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्टेड रहना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होंगी. जर्नी उतनी आसान नहीं रहेगी, थोड़ा थोड़ा मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अप्स एंड डाउन्स लगे रहेंगे, बट अगर आप अपना फेथ दिखाएं तो इंडियन इकोनॉमी रेजिलिएंट है. और ये क्राइसिस नहीं, ये इसको मैं एक अपॉर्चुनिटी के जैसे देखता हूँ कि जब भी कोई क्राइसिस आता है तो हमारी जो इकोनॉमी को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है ताकि हम अगला सफर तय करें और अपनी जो वीकनेसेस हैं और उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करें.
ये सब होने वाला है, बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, जैसे मोदी जी भी अब नए ट्रेड रूट्स की तलाश कर रहे हैं, नई रिलेशनशिप्स बिल्ड कर रहे हैं। अभी मोदी जी जापान गए हैं और चाइना के साथ भी नई डील्स वगैरह करार करने वाले हैं। उससे क्या होगा कि इकोनॉमी को एक नया पुश मिलेगा, और इससे थोड़ा हमें ये भी देखने मिलेगा कि यूएस एज अ वर्ल्ड पावर, थोड़ा पावर शिफ्ट हो रहा है वर्ल्ड में। जैसे ब्रिक्स को हम देखें तो ब्रिक्स ग्रुप में क्या है कि ऑलमोस्ट 50-60% पॉपुलेशन है, और उसी तरीके से 40-50% का इकोनॉमिक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ब्रिक्स भी नई नई ट्रेड डील्स वगैरह एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, और लोकल करेंसी सेटलमेंट पे एम्फोसिस दे रहे हैं। तो ये सब कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी हैं, और जैसा वो प्लान कर रहे हैं अगर वैसा ही हुआ तो नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में हम एक मैसिव अप ट्रेंड देखेंगे इंडियन मार्केट में। राइट। अभी तुमने जिक्र किया पीएम मोदी के जापान विज़िट का, और वहाँ पे अगर देखा जाए कि उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने जापानीज़ कंपनीज़ को कहा कि आए इंडिया में इन्वेस्ट करें. ही ऑल्सो हाईलाइटेड दैट द जापानीज़ कंपनीज दैट आर प्रेजेंट इन इंडिया, even the stock markets has rewarded them. For instance, मारुति सुजुकी, राइट, कि जैसे मारुति सुजुकी ने रिसेंटली अपना जो विटारा कार है उसका ईवी का प्लांट गुजरात में पीएम मोदी ने इनाग्रेट किया. तो अगर देखा जाए तो मारुति सुजुकी का स्टॉक 2% ऊपर चला गया. तो I believe PM Modi was referring to that, and he was also asking Japanese companies to come and set up manufacturing plants in India and make India as an export hub. सप्ताह फिनिश होते होते दो बहुत ही अच्छी गज़ब की न्यूज़ आई, जो हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग जीडीपी ग्रोथ, और आई थिंक दूसरा था कि जो जिस पे हमने थोड़ा सा टच अपॉन किया था लास्ट वीक मेरे ख्याल से, और मुझे तो इतना उम्मीद नहीं था रिलायंस एजीएम की कोई ऐसी बड़ी अनाउंसमेंट्स होगी, बट लुक्स लाइक मुकेश अंबानी हैड अ सरप्राइज फॉर in the fold for all of us, right? So I would quickly go to those two slides where you can talk about those updates. So the AGM has basically given some new highlights, and some of the key highlights are like that Mr. Ambani pointed out that Jio IPO is confirmed, that they are planning to do the paperwork and all that, and this IPO might be expected sometime next year, in the middle of the next year, 2026. So that is very good from value unlocking perspective, because Jio is the leading telecom provider. So if they go to IPO, they can raise a lot of funds, and they can utilize those funds for other services and all that. That's very good. And Mr. Ambani also highlighted that they would be launching a new company called Reliance Intelligence. So this is going to be a big AI push, especially from a leading Indian company. We know that there has been a huge traction on this front. There are smaller players, and there are a lot of companies and startups doing work in the area of AI. And as you know, that Reliance is the leading player in India, and they have a huge financial muscle, and they have access to markets, access to technology. They are partners with some of the leading world MNCs, including Meta and all that. So they can definitely leverage their connections, their technology, and they know how to do business at a scale that Reliance operates. So they can definitely create something very massive, just like Jio and some other bigger companies. And Mr. Ambani also pointed out that they are going to create new energy ecosystem. They will focus on green energy, and which seems to be the need of the hour, because reliance on fossil fuels and all that, it's not a long-term sustainable thing. So that's also very good thing. And AGM also highlighted that there are going to be a lot of
tech innovations, especially in Geo frames and some other initiatives. I don't have the key details about that, but it seems like they are working on those things. Like they are enhancing their R&D and all that uh, to keep keep up with the latest in the technology. So that's a very good thing, and they have a huge vision for India first growth, and they say that India's GDP growth would be up to 10% next 10 15 years. So that's a bold step, and if that happens, that you can see that as per rule of 72, power of compounding. Uh, I mean, markets can really go significantly higher from here. Let me put it in perspective. Currently, economy has been growing at the rate of like 6.57% growth, right? So if we look at that, so in that case, the economy would double every 10 years. But if we, grow at the rate of 10%, then the economy would double in 7 years. So that's the kind of impact 10% growth can have. And when it multiplies, let's say in 21 years, right, the economy can be, 8 times. So currently it is like 4.3. So it could be 32 to 34 trillion dollars if we grow at that rate. And similarly, if we just grow at 7%, then in 21 years, we would be just like 4 times, which is like 4 into 4.23, 16, 17 trillion dollars. So here we are looking at potential doubling effect, right? So this picture basically, it's a beautiful picture because it gives us a holistic perspective on what kind of tariff rates are being levied upon which countries. So if you see that 50% is the highest tariff by US, and there are only two countries which seem to have this 50% category. So India and Brazil. So now we see that other countries have like 10%, 15%, or 35% in case of Canada. So Mexico has about 25%. So we see there are varying levels of tariff rates. So what happens is that because of 50% tariff, some of India's goods will not be competitive in US. So now, but again, when the rates have become effective on August 27th, so a lot of other countries started reaching out to India because they saw this as an opportunity. Because if you look at some countries, like for example, Colombia has 10% rate, right? So Colombia would probably reach out to India saying that some of the things that you are sending to USA and your product will levy 50% tariff duty now. So why don't you send it to us in Colombia? Our products basically have 10% levy. So we will just repackage it, label it made in Colombia, and send it to USA. So in that case, they would have 40% arbitrage. Now that 40% can be split between India and Colombia. So somewhere around 30%, cost increase, the products can be sold to USA. Now the thing is that this is not the perfect solution because India is still losing on it. Excuse me. Excuse me, I have a bad throat and cough and cold. So in that case, India is still losing it, but India is not losing the entire 50%. So we see that the tariff impact will cause some of the global supply map to be rerouted and recreated, because a lot of goods and services which are being supplied from one country, they might still end up in US, but through a different route. That is scenario number one. Scenario number two could be that India might choose that, okay, these products I will no longer send or ship to USA. India would probably explore different markets like China, Russia, Latin America, Africa, or probably in Asia. They would explore new markets where the products can be sold. Excess supply can be distributed. Now, these are the options, and as you can see that Prime Minister Modi is traveling to
Japan, traveling to China, meeting with Putin and Xi, Mr. President Xi. So uh, those are the things where we will see renegotiation of deals, and probably they will identify solutions to this problem called tariff from USA. And uh, time will tell, what new strategies come up and all that. But here I want to tell you another perspective of tariff impact. So right now, so far we have discussed the impact of tariff hike on India. Now, what is happening to USA? So recently we have seen that USA has also started facing the impact of increased tariffs. So this impact has been felt from Mexico and Canada, their immediate neighbors, and to some extent from European Union. So I'll give you some examples here. So recently, uh, as we know that USA has a trade surplus on agricultural dairy products, and some of those like technology and automobiles and all that. So most of the pain points that they have felt recently is from agricultural produce and products. So USA exports about $15 billion worth of agricultural produce just to Canada, and this includes kind of tomatoes, peanut butter, and other daily consumption items, dairy, cheese, milk, and those things. So recently, what happened? Uh, about $3 billion worth of cheese and dairy, including milk and all that, that was sent to Canada, but Canada simply rejected those. So that means hundreds of containers filled with all of these were returned from Canadian borders. So you can see the impact is massive, and the milk that was returned by Canada, eventually, it will go stale, and in some cases there was no way to store it or supply it to any other clients and all that. So a lot of milk was actually drained into the ground. That milk was just good. I mean, you can see, and the milk and all that dairy produce is produced by farmers in Midwest, in California, and all that. So they are suffering massively because of that. So these are the impacts of increased tariffs. We can see that the world is reacting to what America has started, right? America has started thinking, okay, we are focusing on self. We want to do it for our selfish interest. But there is a second part of the puzzle is that the reaction from the world that they did not factor into their calculation. And when this happens, uh, this is going to rewrite the rules of the world trade, and this is going to reroute the supply chain dynamics for all the participants. And this will create a new power dynamic across the world. So speaking of reactions, right, sounds like China has taken a lead in terms of fighting back the US tariffs on itself as well as on other countries. Why I'm saying this? Because not many people may be knowing, but there is a news that came out that President Xi Jinping wrote a secret letter to the Indian president in back in March, proposing that to improve ties and basically come together and face or fight back the American or the Trump tariffs, right? So अभी Yeah. तक हम जो मीडिया में देख रहे थे कि इंडिया और चाइना का एक न्यू चैप्टर ऑफ बॉन होमी चल रहा है, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं मतलब कई लोगों ने शायद सोचा होगा कि ये कहीं इंडिया का मतलब यूएस के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है, तो अब as an alternative to build good relationship with China, but no, it's not like that. The initiative was taken by China and that too President Xi Jinping. So अभी तक हम जो सामने मीडिया में देख रहे हैं तो वो that is culmination of the that initiative taken by China. So
इसीलिए मुझे लगता है चूंकि एग्जैक्टली। उसको शुरू चाइना ने किया है, मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा दम खम है। और स्पेशली हमने देखा भी कि चाइना ने ऑलरेडी इंडियन कंसर्न्स जो थे उनको एड्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ the rare earth minerals, the magnets that are needed for the automobile sector, as well as the fertilizers, right, for the Indian farmers. So चाइना ने बोला है। और अगर देखा जाए तो दोनों कंट्रियों के बीच में जल्द ही डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होंगी, राइट, जो कोविड के बाद बंद हो चुकी थी और कभी शुरू नहीं हुई। तो ये देखने वाली बात होगी कि कौन से सिटीज़ सिलेक्ट किए जाते हैं फॉर द डायरेक्ट फ्लाइट, वेदर इट्स मुंबई, दिल्ली और शंघाई और बीजिंग एट्सेट्रा, राइट। और इंडिया ने, और एक बात थी कि इंडिया ने चाइनीज़ कंपनी जो है इंडिया में जो ऑपरेट करती है उनके मैनेजरियल स्टाफ को वीज़ा देना रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो कई सारे मैनेजरियल स्टाफ को चाइनीज़ कंपनीज़ के उनको सिंगापुर से काम करना पड़ता था, बट इंडिया ने वापस उनको वीज़ा देना शुरू किया है। और चूँकि हमने देखा है कि चाइनीज़ टूरिस्ट्स because of growth in the Chinese economy, they are going traveling all across the world and seeing the world. Similar trend has been noticed in India, right? That because of the growth in Indian economy, a lot of Indian travelers, India has become a source country, right? Source market for travelers across the world. So इंडिया और चाइना के बीच में टूरिज़्म और टूरिज़्म एंड ट्रैवल के लिए भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। दोनों इकोनॉमीज में गेट बेनिफिटेड बिकॉज ऑफ दैट, राइट। सो कई बार ऐसा होता है ब्लेजिंग इन डिस्गाइज कि बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टेरिफ्स, राइट। सो it has rather brought these countries together and like basically expedited that process of working closely and in benefit of each other, right? So I think इसके भी मतलब उसके साइड इफेक्ट्स कई सारे हैं और अच्छे साइड इफेक्ट्स है। यूएस ने टैरिफ बढ़ा के वर्ल्ड को फोर्स कर दिया कि अब आपको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी, और अनलाइकली पार्टनर सब साथ में आ रहे हैं और कोऑपरेशन की बातें कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। सो this is basically from Fed watch list tool. So they basically publish probability of rate cuts. So Fed हमेशा 6 हफ्ते में मिलता है और इसमें ब्लू कलर में इंडिकेट है probabilities. So जहां भी लगभग 70% से ज्यादा probability दिखती है तो वहां ऐसा मार्केट एज्यूम करके चल रहा है अभी कि वहां रेट कट हो सकती है। तो अगर यहाँ से हम देखें कि सितंबर से लेके जनवरी तक तो लगभग हमें 3 रेट कट की उम्मीद दिखती है ऐसी। देखो ये नंबर चेंज हो सकता है, फेड के नंबर जैसे हर मीटिंग में वो कहीं पीसी इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट्स को देखते हैं और वो नंबर्स क्या है काफी डायनामिक हैं। अगर ऊपर नीचे होते हैं तो उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि ये फ्यूचर्स डेटा को प्रोबेबिलिटी के रूप में इंडिकेट कर रहा है। तो उसके हिसाब से हमें 3 रेट कट की उम्मीद दिखती है यहाँ पे, और नेक्स्ट ईयर भी कई रेट कट्स हो सकते हैं। और इंडिया का तो हम जानते ही हैं कि इंडिया का भी टच अपॉन करने में ये है कि लास्ट 1 ईयर सितंबर अगर हम देखें तो इंडियन मार्केट ने ऑलमोस्ट सितंबर 25 लास्ट ईयर में हाई बनाया था 26,277 का, और अभी मार्केट है लगभग निफ्टी 50 24,400 समथिंग। तो अगर हम देखें तो 1800 पॉइंट नीचे है। तो वो लगभग अगर आप देखो तो 6-7% के आसपास फॉल है इन लास्ट 1 ईयर। जनरली इंडियन मार्केट आपको 12 से 14% का रिटर्न रफली देते हैं। तो पिछले 12 महीने में इंडियन मार्केट ने लगभग -7% का रिटर्न दिया है, और लगभग अगर आप हर महीने का 1% ऑन एन एवरेज मान के चलें तो लगभग टाइम वैल्यू ऑफ करेक्शन अगर दोनों फैक्टर कर लें तो 12, 7, 19, 20 रिटर्न पीछे चल रहे हैं। तो ये बेसिकली जो अर्निंग फेज जो आएगा अभी फेस्टिव सीजन 1-2 क्वार्टर के बाद से थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा, और हमारी जो लोअर बेस थे मतलब क्वार्टर के, और लास्ट ईयर का बेस काफी लो था। तो जैसे कंपनीज की अर्निंग्स इम्प्रूव होंगी तो मुझे लगता है कि 2026 विल बी अ वेरी गुड ईयर। तो काफी अच्छा आउटलुक है इंडियन इकोनॉमी के लिए,
ये टैरिफ एक बेसिकली एक हेडविंड था, और अब टैरिफ का चैप्टर भी धीरे धीरे इसकी अनसर्टेनिटी दूर हो रही है। एक बार 50% लगना था, काफी फियर था लोगों को कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वो जैसे जैसे सर्टेनिटी की तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट इस बुरे वक्त को भी डाइजेस्ट कर लेगा, और फिर यहाँ से चीजें इम्प्रूव ही होंगी। ऑन दैट नोट मुझे लगता है कि 50% टैरिफ जो है, और एटलीस्ट जो एडिशनल 25% टैरिफ लगे हैं, वो सूनर और लेटर दे आर गोइंग टू गो अवे, क्योंकि नाइदर ऑफ द कंट्री आई थिंक ट्रूली वांट्स इट दैट वे। इवन दो यूएस ने वो टैरिफ लगाए हैं, मुझे नहीं लगता है कि यूएस भी लॉन्ग टर्म में चाहेगा कि वो उस तरह के टैरिफ्स बने रहे। तो मुझे लगता है कि सूनर और लेटर, आई थिंक देर इज़ अ कंसेंसस इन द मार्केट पार्टिसिपेंट एज वेल दैट इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन एंड इट्स गोइंग टू गो अवे। कितना परसेंट होगा क्या होगा वो देखने वाली बात है, बट एटलीस्ट लगता है कि 25% एडिशनल टैरिफ्स तो निकल सकते हैं, क्योंकि अभी भी इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड निगोशिएशंस चल रहे हैं। और ये तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इनिशिएट नेगोशिएशंस, ट्रेड नेगोशिएशंस विद यूएस, राइट। वो बात अलग है कि दोनों कंट्री कोई कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाए, बट मुझे लगता है कि इवेंचुअली दे विल गेट देयर एंड देयर वोंट बी वी विल नॉट सी द एडिशनल 25% टैरिफ। सो आई थिंक दैट विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर ओवरऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स। और वो कब जब भी होगा वो अनाउंसमेंट, तो मार्केट के लिए वो एक बहुत ही अच्छा इवेंट होगा कि जो अभी जितना भी पैसिमिज्म वगैरह है, वो उस टाइम पे जो 25% हटाने की या रिड्यूस करने की न्यूज आएगी, वो मार्केट के लिए एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। राइट। ओके, मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा, both in terms of the week that gone by and the week that going to, I mean the next week, right? So अच्छा, I think we touched upon a lot of important factors and aspects that are going to impact the market. So कोई parting thoughts before we close? Parting thought is just that, uh, stay positive and stay invested for the long term. And we know that there would be some pessimistic news, some negative news, but just remember that these kind of news and these kind of phases are just temporary. ये वक्त भी गुजर जाएगा, और जब अगर आप ये वक्त गुजार दोगे, तो अच्छा वक्त आएगा, और उस टाइम पे आपका पोर्टफोलियो कई गुना मल्टीप्लाई होगा। तो जस्ट बने रहें मार्केट में, और ऐसे समय पे को गुजारने के लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या है कि आप लाइफ में 3-4 हॉबीज रखिए। वो हॉबीज में जब भी मार्केट में बुरा वक्त गुजर रहा हो, तो आप अपनी दूसरी हॉबीज पे फोकस करें, चाहे आप ट्रैवल करें, चाहे आप सिंगिंग करें, डांसिंग करें, अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलें, गोल्फ खेलें, जस्ट एंजॉय दैट। मुझे हमारे सारे जो दोस्त हमें देख रहे हैं, उनको बताना है कि प्लीज़ like, subscribe and comment on the videos, because your comments important feedback loop, what additional events we should focus more, etc. So please keep commenting and keep watching and keep supporting us. Thank you everyone. Bye until next week.